वेलकम बैक व्यूअर्स टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। एक बहुत ही खास बात आपसे डिस्कस करते हैं आज। इट हैज बीन बिलीव्ड दैट द ग्रेटेस्ट ऑफ इन्वेंशंस, डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशंस दैट हैपन, मतलब आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं और जो हमारी दुनिया का वातावरण है and where we have progressed to is because of something that has happened in the past. We have encountered all those things, achieved all those things, और उन सब में तीन ऐसी personalities का योगदान रहा है who have actually shaped the world into what it is today. They are either scientists or philosophers or artists. Yes, art is a very integral part of life. अगर history, our history, if it was not riddled with that art and architecture, हमें कुछ भी दुनिया का पता नहीं लगता। राइट फ्रॉम दी केव मैन स्टडीज, जहां पे हमें पता लगा कि आदि मानव भी कलाकार था। और आज हमारे बीच वी हैव इंडियाज नंबर 1 कंपनी व्हिच इज कॉल्ड ईस्ट क्राफ्ट डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड। वी हैव द फाउंडर्स ऑफ दोस कंपनी, कृष्णन, राजेश एंड राजप्रिया विद अस। देयर आर मेनी सच कंपनीज आउटसाइड of India in many countries, but in India this is the only one. Thank you so much for being on this show with us, Rajesh and Rajapriya. It's an honor to have you over here. You are contributing so much in the world of art and making the country more beautiful, I would say, and its buildings and spaces more beautiful. How did it all begin? Like after finishing art college, I started, exporting paintings and all, customized paintings to departmental stores in Europe. Mm-hmm. And I think then the major break came when Delhi College of Art principal, he introduced me to Mr. Sridharan, chief of Delhi Metro. Oh, okay. And we are doing artwork for Delhi Metro. I think it's almost more than 20 years now. Yeah, आपने बताया था जब हमारी बात हुई थी पहले, you had very modest beginnings by doing paintings for different showrooms and all that. That's how you started? Showrooms and even residences. That's, we started the work. Then we started doing for big corporates. Then we came to, doing work for only government actually. Okay. And in fact, I think ours is the only company which can say that, we are doing artworks for not only Delhi Metro, but for airport authority since 2006. We are doing artwork for suitability buildings since 2007. And in private, we are doing artworks and maybe signages for ITC Hotel also since 2007. Yeah, I remember even on our last discussion in another interview where we were together, we had talked about this thing. So there has been one question, मतलब एक सवाल हमेशा से मेरे मन में उठता रहा है कि being an artist and pursuing your dream as an artist, खासकर इंडिया में, I believe it is not that easy a thing because of so many opportunities and challenges. क्योंकि आर्ट की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है और एक अपनी भाषा और परिभाषा दोनों अलग है। तो आपको भी कहीं ना कहीं ये फेस करना पड़ा for people to understand what you do and how you can contribute? Yeah, because what I do is customized art. So it is, and everybody, and art is a very subjective matter. So everybody will have their own, likes and dislikes. And that is a challenge which is continuing even till today also. You can see, like whatever I make, it's a public art. But then to satisfy each and every individual involved in that project, it's not an easy job. At times also we get, like one has approved, but the other person who is more senior to him, he has not like that. These things keep on happening actually. That's a day-to-day job to us nowadays. मैं समझता हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझ गया जो आपने बोला है, लेकिन मैं इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा. How do you cope up with this being an artist yourself? Now I have learned the tricks of the trade is, after 20 years, that's all I can say. To how to satisfy everybody, how to satisfy everyone's ego. मैंने खुद भी कई जगह, that's art in itself actually. To how to satisfy all the client having different taste in one same department. Now that itself is an art. नहीं, क्योंकि मैंने कई बार सुना, and I come across this phrase myself being an artist. I come across this phrase, कि artist लोगों को business करना नहीं आता, and here you are the number 1 company and with your own share of experiences, bitter sweet experiences, all of them put together. तो इस सब के अंदर राजप्रिया, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, you are a civil engineer. तो how does a civil engineer fit into this entire scheme of things?
और and you're also आप one of the main artists of East Craft India, Yeah, right? I'm a designer. तो how did that transition happen? क्या आपकी रुचि पहले से ही कला में थी या Basically, I got married. that's a very wonderful. That's we need to clap for that from you. That's really amazing. Like, Yeah. actually, yeah. The thing is, I got married. It was like a personal decision, like because we had other commitments like elder parents and all, and my mother whom needed attention. So we decided, rather than going out and working, like you can help me out. So at that time I still believe, because a designer used to sit in Model Town. I remember we working for DuPont, and he'll be begging her, do the design, finish it, and he'll be running and coming back with his old Maruti 800, 3 p.m. and all, 3 a.m. and all he used to reach, when this designing, and designing used to be there. So, after I just felt, maybe if I learn some softwares, like we can incorporate these things, we can make in-house all these things. So that's how I started learning some basic softwares, and I got into designing, and finally, like, now we can proudly say like that everything is in-house. Such modest beginnings, na? Matlab, Yeah, it's a even very when I modest think beginning. of this thing, na, 20 years ago, what I was doing, like even my wife was running from pillar to post for taking files to a printer. आप बिल्कुल आपने मेरे को वो सब चीजें याद दिला दी Yeah. एकदम से. कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि वो जो समय था बहुत अच्छा था और बहुत एंजॉय किया था, मतलब इतना स्ट्रगल के बावजूद? Now we are feeling as an enjoyment, but that point of time it was very difficult, because as you said, we started in a very modest condition. And everything we used to operate from home. So a lot of things were there, but we enjoyed the course on the whole, So before I ask another question to Rajesh or you, I want you to say, what is it that you would like to say? आप क्या कहना चाहेंगी अपने जैसे और हमारे दर्शकों को जो इस फील्ड में हैं, या जो आपको देख के आज प्रेरित हो रहे हैं और चाहते हैं कि वो भी कला की दुनिया में अपना नाम करें, मतलब वो भी शायद आज सिर्फ एक उनके पास शायद लैपटॉप भी ना हो. So basically, one has to be very creative, and any project when it comes, before starting the designing, you have to read a lot about the client, what's the nature of the work. So reading and observation skills, I've said before also, like observation skills, reading, and not limiting yourself to one way of thinking. So that's very important actually, just not limiting yourself to anything. So how difficult or easy was that for you? Because coming from a civil engineering background and then reading about art. So like being an engineer, always engineers, they shine in all the fields. That's really a very big advantage, because they shine in any field they go, because they can merge into engineers, there you need to pat yourself on your back for that one. Yeah, they can merge into anything, because in engineering, that's what is being taught, like planning and execution. Yeah. So that's that has helped me a lot. My 4 years education has helped me a lot. And we also work in deadlines. As an engineer, we used to have a lot of deadlines, everything. So that's one main important thing. It has helped me. And another thing, maybe I was creative also. So that he explored. He tapped it. So that's another thing. Wonderful. So amazing. आप जैसे, like I'm looking at the list of work that you have been doing, Madhya Pradesh Bhavan, and then Tezu Airport in Arunachal, then the Airport Authority of India, then you are also doing something in Gwalior, the IIT, the IITs, and then Delhi Metro, and then Engineers India Limited, Aadhaar Staff Quarters. There's so much. It's a roster of upcoming recent project, like we did, I think one of the biggest artwork program done in recent time for NBCC, upcoming this new Madhya Pradesh Bhavan. And then nowadays I'm doing this Gwalior Airport also. And plus we have recently about to complete, I can say, the for Engineers India Limited, the upcoming Aadhaar Staff Quarters in New Delhi. And then I've done lot, one of the, I can say, one of very big mural, hand-cut mosaic mural inside Tezu Airport. I think that is the one of the biggest, hand-cut mural you will find in any of the airport in India. It's almost more than 2,500 square feet. I want to come to a very special question over here, Rajesh, because I've known you for donkey's years, basically, and I feel so happy that you are here with me a second time in an interview and all. There have been a lot of struggles that even I have seen that you've gone through, and art के साथ वो सब करना काफी मुश्किल होता है. What has been the driving force that has kept you going? Basically, I can say, my vision and mission, like
my focus only was success. So hurdles will be there, but since all my focus is only on success, so immediately I will just remove and I'm moving forward. And even now, I have to do lot, before I reach where I have to reach. But this obstruction, they keep on coming hurdles. But since my focus is only on that, so उसको मैं हटाते हुए आगे बढ़ता रहता हूँ. I don't see in the as obstacles at all. That is just part of the journey. जर्नी तो रिडक्शन है कि ना चे तो मैं अकेला चलो रे चलते रहो बस. Yeah, so I keep on moving. That's definitely the And best thing that we can passion do. is also, I love what I'm doing. That is another main. That is the really amazing. In fact, I viewers, this is enjoy the working. most amazing thing. If you love what you are doing, practically आपको वो बोझ लगेगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि you love what you're doing. Come on, you live that, you breathe that every moment, and it is natural to you. तो हार्डवर्क का सवाल ही पैदा नहीं होता, वहां तो सिर्फ पैशन ही होता है और इंसैनिटी होती है, right? And despite all the setbacks that you had, this was the only thing that kept you moving on. कि करते जाना and all that. How has it been? I'll ask you a different kind of a question. This is a program, Leaders Today, and you are actually the leaders when it comes to this industry in our country. I'll ask something in these kind of pressure situations. आप दोनों ही एक कंपनी चला रहे हैं, आप दोनों उस कंपनी के पार्ट हैं, लेकिन उससे ऊपर आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं. How does it cope over there when it comes to your professional differences, or what do you say? How do you align yourself professionally and also beyond profession? Because ये frustrations आपको भी आती होंगी, आपको भी आती होंगी इकट्ठे ही. In general, actually, he also discusses everything with me when it comes to profession. Like, in fact, many decisions are joint decisions only. There's not been a single decision till now, like, that I would say he has taken it separately or I have taken it separately. So, but major, he asks me, for him, like, this is very important. Mm-hmm. So, anything he'll discuss with me. There's not been any problem with that. And personal level, since the business we are doing, that has become more personal now. The work is the personal thing we have. Work is the most personal thing you have. Between, obviously, definitely. How does it feel from having just not even one person on the computer? एक time वो था 2 decades ago. Not one person, no, I was a person. और आज 25-30 लोग आपके साथ हैं मेरे ख्याल से. It's more than that. It's more than that. We started. And sorry, I'm cutting you short because it's really exciting, because 12,000 square foot का आपका studio, it's the biggest. That time we didn't have it. We just started from our home. I used to work the design and do everything. I have done everything. I am zero in accounts, you'll not believe, but I have managed my company account. That is the one thing we used to have, because he used to explain me and I never used to get. Finally, I have known him as a man of numbers always. But finally somehow I created my own balance sheet in Excel. I used to match what are the expenses, everything. I have done mostly all the things. Which I can't do, which I have never imagined. I have done many things. One thing last that I would want from you, any one thing that you both feel jointly together with great passion that you would like to share with our viewers when it comes to art, when it comes to your industry. Be the best person to answer that. I would say one should be passionate about what one does. And people who have interest in art, passionate, they only should come to this field. They should not come to the field just because it is paying well. So if your passion is there, even if you are not good at art also, you can become a good artist. And I think one should enjoy the course. That's a very important thing. So what you are telling is that, especially for artists, and what you are telling is that आप कुछ भी काम कर रहे हो and learn to enjoy that. That is what you are telling. So thank you so much, Rajesh and Rajapriya. So they run the company Eastcraft Designs Private Limited, India's #1 company when it comes to art installations, that is making notable spaces of our government infrastructure so pleasing to the eye. Thank you so much for being over here with us, and the lesson that they gave. Remember, आप चाहे कोई भी काम करते हो, it doesn't mean कि आप आर्टिस्ट ही हो. You could be a doctor. आप एक इंजीनियर हो सकते हैं, आप एक टीचर हो सकते हैं, एक योगा एक्सपर्ट हो सकते हैं, एक वेलनेस एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप एक एक्सपोर्ट बिजनेस चला सकते हैं. लेकिन अगर आपको
अपने काम में खुशी नहीं मिलती तो सब व्यर्थ है। इसलिए खुश रहना सीखिए। एंड विल कम बैक विद अनदर गेस्ट एंड आई थैंक Cloud Access, rupiapaisa.com and Benson Trophies for this wonderful opportunity to interview Rajesh and Rajapriya. Thank you so much. We'll be back soon again. Being a leader, आप कैसे डिफाइन करते हैं लीडरशिप को एंड व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ लीडर? सर सबसे पहले मैं कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेट इज ऑनेस्टी। क्योंकि लोग कहते हैं सबसे बड़ा डर क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा डर वाकई ही है। Ever wonder the greatest weapon you can arm yourselves with? ऐसा कौन सा शस्त्र है या ऐसे कौन से अस्त्र शस्त्र हैं जिसको धारण करके आपको लगता है कि आप अजय हो गए हैं? You can conquer anything. You know, when I was in school, उस टाइम पे 12th क्लास में फेयरवेल होता था तो वी यूज्ड टू ऑल टेक ऑटोग्राफ्स विद ईच अदर एंड आई वेंट विद माय ऑटोग्राफ डायरी और मैं अपने प्रिंसिपल के पास गया और मैंने कहा सर आपका ऑटोग्राफ चाहिए एंड ही रोट अ स्टेटमेंट दैट चेंज्ड माय लाइफ। ही रोट हैव फेथ, फेथ कैन वर्क मिरेकल्स। विश्वास रखना सीखो, विश्वास से चमत्कार हो जाते हैं। एंड हमारे दूसरे भाग में जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ व्हाट फेथ इज, because as we were discussing with him, his entire family is bound to that faith, and that faith is about serving to people कि आप पहली रोटी दूसरों को खिलाओ, आपकी रोटी खुद अरेंज हो जाएगी। हमारे बीच हैं डॉक्टर समीर मित्तल जो अबोहर पंजाब से आए हैं, मीरा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एमडी हैं। दिस इज जस्ट वन ऑफ द बिजनेस, ऐसे कई बिजनेस हैं आपके और अभी इनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल एड्यूप्रेनर अवार्ड के साथ आपको सम्मानित किया फॉर सर्विस टू द एजुकेशन इंडस्ट्री। बहुत बहुत स्वागत है समीर जी आपका इस शो के अंदर। थैंक यू सो मच। नो आई एम वेरी ग्रेटफुल और हमारा सौभाग्य है कि आप आए एंड एजुकेशनिस्ट हैज कम टू द शो, क्योंकि शिक्षा का जो दान है या फिर अगर बोला जाए दान भी नहीं, अगर उसका जो महत्व है उससे बढ़ के कुछ नहीं। ये देश गुरु का ही तो देश है। और किसका? हमारी सारी वाणी, यस हमारी संस्कृति भी यही है। तो सबसे पहले मैं आपसे आपके अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में जानना चाहूंगा कि ये किस तरीके से हुआ और हाउ डिड दिस ऑल कम अबाउट टू बी? सर ये बेसिकली एक अपना पंजाब फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब की, और जिसके साथ NIDF फाउंडेशन है, उन्होंने मिलके ये प्लेटफॉर्म वो 2 साल से कर रहे हैं प्रिंसिपल्स के लिए। तो ये पहला अवार्ड फंक्शन था विच वाज इंटरनेशनल लेवल, जो बिजनेस ऑनर्स के लिए जो ऑनर्स हैं उनके लिए रखा गया था। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो उनका योगदान रहा है एजुकेशन में, सिंस जैसे हमारा रहा है 23-24 ईयर्स का, तो उसकी वजह से ये हमें सम्मानित किया गया। हमारी प्लेसमेंट्स का हमारा जो योगदान है हमारा स्पेशली हेल्थ केयर में, और हमारा योगदान भी है नर्सेज के लिए। अच्छा, व्हाट अ नोबल प्रोफेशन। मतलब आप नर्सेस की ट्रेनिंग देते हैं? इज दैट सर वी हैव अ कॉलेज और सिंस 2000 और हमारा है नर्सिंग कॉलेज। इट वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल कॉलेज ऑफ आवर एरिया which was started by my father Dr. Gauri Mittal, and he is a chairman of the Meera group। and हम नर्सिंग कॉलेज की जैसे स्कूल होता है, कॉलेज होता है, तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स कराते हैं, उनकी हॉस्पिटल प्रैक्टिकल्स कराते हैं। पहले हम बच्चों को अपने ही कॉलेज में फुली डेमोन्स्ट्रेशन, हमारे पास आर्टिकल्स हैं, डमीज़ हैं, लेबर है, मिडवाइफरी, प्रेगनेंसी कैसे होनी है, प्री नेटल केयर है, पोस्ट नेटल केयर्स हैं फुली। क्योंकि देखिए डॉक्टर क्या है, वो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और फिर नर्स जो होता है हु हैज़ टू डील विद द पेशेंट साइकोलॉजिकली, और फिर ऐसा। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे खुद 2-3 बार ऑपरेशन हो चुके हैं और मुझे पता है द नर्स वुड कम एंड वो कॉन्फिडेंस रहता था कि ये है, शी इज टेकिंग केयर। तो वो बहुत बड़ा एक उनका योगदान ना, मतलब जैसे डॉक्टर्स को एक देवता का स्वरूप कहा गया है ना, वैसे मेरे ख्याल से अगर ये भी सर इसको नोबल कॉज इससे बड़ा मैं समझता हूँ हो ही नहीं सकता। एब्सोल्युटली। हमारी इंडियन नर्सेज भी ओवरसीज हर कंट्री में सिर्फ इंडियन नर्सेज की डिमांड सबसे ज़्यादा है, हाईली पेड प्रोफेशन है सबसे ज़्यादा, इससे बड़ा। इनफैक्ट आपने मेरे को बताया था कि अभी आपने एक नर्सेस का बैच रेडी किया जर्मनी के लिए। जी सर, वो हमने क्या किया, इमिग्रेशन क्यों हमारे बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी, और ओवरऑल अब अदरवाइज भी हमारे जो बच्चे हैं अभी भी ओवरसीज काफ़ी कंट्रीज़ में हैं। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इस तरीके से मिलकर एक इस तरीके का कुछ शेड्यूल हुआ है।
तो अभी 300 नर्सिस के लिए जर्मनी की रिक्वायरमेंट आया है और 200 कनाडा के लिए My God. और दुबई का रिटर्न आना बाकी है, अप्रूवल आ गया है कि आएगा। तो मतलब मैं कहीं भी between 700-800 to 1,000 I can look at 100 these kind of बिल्कुल requirements. बिल्कुल। So अगर viewers, if you're watching this and you have someone in your circle who is wanting to be a nurse और जो आपको लगता है कि they can do that kind of a job, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा धैर्य चाहिए सबसे पहले as a nurse. Yes, yes. Then Mira group of colleges has this courses on nurses and your placement is also guaranteed. That is so amazing. मतलब बिल्कुल। आपने मतलब किसी की future, you know, कहते हैं कि मतलब कि there's a great saying जी। कि अगर किसी की मदद करनी हो, भूखे की मदद करनी जी, हो, जी, जी, जी। तो आप उसे एक टाइम का खाना देते हो ना, तो आप उसे केवल उसे एक प्रहर के लिए उसकी भूख मिटाते हो। Yes, लेकिन अगर आप yes, उसको yes. सिखा देते हो कि ये खाना कैसे कमाना है, तो जिंदगी भर की भूख मिटा देते हो उसकी। यू नो, यू सॉल्व द हंगर क्राइसिस फॉर अ लाइफ टाइम। आप उनको विद्या भी दे रहे हैं और सर, प्लेसमेंट भी देखें, दे रहे हैं। मैं समझूंगा कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, वेरी लकी, कि पहली बात तो मैं उस फैमिली में हूँ जहाँ मेरे दादाजी भगवान हैं, ही इज 93 ईयर्स ओल्ड। क्या बात है। और उनकी बदौलत ही ये सब कुछ है। एब्सोल्युटली, आपने बहुत अमेजिंग बात की है। और व्यूअर्स, इफ यू पे attention to this one, there is a very strong why behind their business model. You know, हम लोग हमेशा कहते हैं, you know, a business is as good as the why behind it, the intention, the purpose. It is not money. सबसे पहले क्या था, आप इन्होंने जो बोला कि आप मरेंगे नहीं, एक रोटी दे सकते हैं, आप फिर भी जिंदा रहेंगे। सो द व्हाई इज टू एक्चुअली सर्व, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आपके दादाश्री की दादाजी का और then father जो का vision था। धरोहर है, वो Yes, यही है जो yes, आप जो yes, उन्होंने yes. आपको दिया मेरे हिसाब से। सर 55 इयर्स पहले उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, एनजीओ बनाया फॉर चैरिटेबल पर्पस, और ये कहा कि जब तक तुम्हारी सांस चले इसको जिंदा रखना। आप उस ट्रस्ट में फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में यू Yes. डू अ लॉट ऑफ सर्विस टू मैनकाइंड। एवरी ईयर अक्टूबर मंथ का फर्स्ट वीक इज फिक्स्ड फॉर आई कैंप एंड इट इज फ्री आई चेकअप कैंप रहता है। उसमें पेशेंट्स का खाना पीना रहना, उनके मेडिसिन, स्पेक्सेस, ऑपरेशंस, लेंसेज सब हमारी ट्रस्ट की तरफ से रहता है। इसमें हम किसी से कोई ग्रांट नहीं लेते जी। क्या बात है, ये तो बहुत ही बड़ा काम हम हुआ बड़े है इसमें। सौभाग्यशाली हैं कि हम ये कर पा रहे हैं। नहीं, एब्सोल्युटली, अगर हम कभी किसी के काम आ जाए, मेरे हिसाब से Yes. उससे बढ़ के और नहीं कोई, आई थिंक अगर किसी को अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है ना, देन Very यू शुड blessed. काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव बीन ऑफ हेल्प टू समवन इन नीड। दैट इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग यू हैव ever had or you could ever wish for, to be able to be there for someone. Actually, Right? very very blessed, very blessed. आपका अपना अखबार भी है। I mean, there's so many things that you do. I mean, it's like I would portray that a real leader and a serial entrepreneur. So nice officer, ये आपका देखने का नजरिया है। और अगेन थैंकफुल, फिर दादाजी, माय फादर, ये सब उन्हीं का विजन है, उन्हीं का आशीर्वाद है। एंड जिसका नाम मैंने अभी तक नहीं लिया, जिसको हम अक्सर अपने घर में अपना इंजन कहते हैं, वो है मेरी मदर। एब्सोल्युटली। नहीं, मेरा मानना ये है कि भारतीय नारी जो है, और इन जनरल विमेन, नॉट ओनली भारतीय नारी, विमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर द ड्राइवर्स ऑफ आवर डेस्टिनी। my ऑलवेज wife, my family, my brother, my kid, all are family मीरा ग्रुप। सो इसी का एक छोटा पार्ट है हमारा न्यूज़पेपर, जिसको हम बहुत फेयरली मैनेज करते हैं। सो इट इज़ अ बेसिकली डिस्ट्रिक्ट न्यूज़पेपर, एंड फिर मैं कहूँगा इट इज़ ऑल्सो अ लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ आर एरिया, टॉप न्यूज़पेपर ऑफ द एरिया। जैसे वी आर द टॉप कॉलेज ऑफ आर डिस्ट्रिक्ट, हाँ, वैसे ही न्यूज़पेपर है, और ये 22 साल पुराना न्यूज़पेपर है सर। बीइंग अ लीडर, आप कैसे डिफाइन करते हैं लीडरशिप को, एंड व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ लीडर? सर सबसे पहले मैं कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेट इज़ ऑनेस्टी। क्योंकि लोग कहते हैं सबसे बड़ा डर क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा डर वाकई ही है। हमें लोगों के लिए नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ, मेरा मानना ये है, बहुत फर्म बिलीव है, व्यक्ति कहें, पर्सनालिटीज़ कहें, दो लोगों को जवाब देना है। सबसे पहला जवाब खुद को, कि भाई मैं ठीक हूँ, मेरी नज़र में मेरा ज़मीर मुझे सही कह रहा है। एंड सेकेंड इज़ गॉड, एंड गॉड और आपके फादर मदर दोनों बराबर हैं, बट फादर मदर भी पहले आएंगे देन गॉड। बस दो लोगों को जवाब देना है। तो यही मेरा कहना होगा कि किसी के लिए काम नहीं करें, अपने ज़मीर के लिए ऑनेस्टी काम करें, लॉयल्टी काम करें। और मेरे फादर अक्सर कहते हैं कि आपके हाथ में 5 उंगली है, मिलकर ना कोई छोटी बड़ी ना बराबर हो सकती है ना है, बट मुट्ठी बनती है। तो आप अगर इसी ऑनेस्टी से लगे रहेंगे और अगर आपका एफर्ट 100% है,
तो कामयाबी मिलना भी 100% निश्चित है, विदाउट एनी डाउट। What is the plan from here on? You were coming up with a nursing college, another one, और भी कुछ ऐड कर रहे हैं? सर हमारा अभी हमने ऐड अप किया है, वी हैव स्टार्टेड आवर इमिग्रेशन ओके बिजनेस, और ये बहुत समय के डिसीजन के बाद स्टार्ट किया गया है, क्योंकि इसमें मैं समझता हूँ 95% फ्रॉड है ओके इमिग्रेशन बिजनेस में। एवरीबॉडी सेज कि लाओ पैसे मैं भेज देता हूँ, और बच्चा इज डैम मैड, मुझे पैसा नहीं देगा, बट आपको अगर कहोगे 10 लाख रुपए देना बाहर जाना, वो लाके देगा। हाँ, वो बेचारे पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं, वो जमीन बेच कर लाता है। हाँ, पेरेंट्स उसको क्या करेगा, पेरेंट्स ठीक है बच्चे ने जिद करी जाना है तो वो होता है। वो अब हमने अपने स्टार्ट किया है स्पेशली फॉर आर्ट नर्सेज। जैसा मैंने कहा कि उस मॉडल के अंदर हमने एक अच्छी सोच से स्टार्ट किया, अच्छे विजन से स्टार्ट किया, तो सपोर्ट भी गॉड ने वैसा ही आशीर्वाद दिया है कि 300 नर्सेज फॉर जर्मनी एंड 200 फॉर कनाडा एंड फॉर यूएई एंड वाइस वर्सा, यूके, यूएस एंड ऑल। तो मैं अपने ही बच्चों को मास्टर प्रोग्राम के लिए पढ़ने भी भेजूंगा, जॉब के लिए भी भेजूंगा जी, एंड सेटलमेंट के लिए भी भेजूंगा विद देयर फैमिली। जो मेरा जर्मन वाला प्रोग्राम है वो मैं उनको अल्टीमेटली जो मेरा बॉन्ड होगा, अब तो हो सकता है उनकी परफॉर्मेंस पे वो 5 साल का हो जाए, तो दे विल बी गेटिंग द फैमिली वीजा आल्सो विद द पैकेज ऑफ 2.5 लाख रुपीस इन हैंड सेविंग, क्या बात, डिडक्टिंग all expenditures. Brilliant. What an amazing opportunity, and the way you have drafted everything and put together. Safest. Every country has a top priority of nurses, especially Indian nurses. Yeah, absolutely. हाँ, तो हमारी कंट्री में सेवा भाव सबसे पहले आता है ना, हमेशा से। देखिए हमारी जो हमारा जो राष्ट्र है और हमारी जो धरोहर है और हमारा जो ट्रेडिशन है, इसके 2 ही आधार हैं। एक रहा है त्याग, दूसरा रहा है सेवा। शुरू से ही बस त्याग और सेवा पे ये कंट्री टिकी हुई है। आप चाहे कोई भी रिलीजन उठा के देख लें, कोई भी कम्युनिटी उठा के देख लें, त्याग और सेवा सब में है। और उसी की वजह से आवर एंटायर एंसेस्टर्स हैव सैक्रिफाइस्ड एंड हैव सर्व्ड, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर ऑल ओवर हियर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई on the shoulders of such great leaders, such leaders as Dr. Sameer are born and are guiding the way for millions of us Indians, and I would say the future nurses who would be helping patients around the world. जैसा मैंने कहा कि अवार्ड लेने से पहले आई वॉज वेरी नॉर्मल, चलो अवार्ड मिलना है ठीक है, और एक्चुअली में मैं अवार्ड लेने के बाद इतना रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा हूँ, इतना लोड ऑन माई शोल्डर्स कि मुझे वाकई में ही अब और ज़्यादा सिंसियरिटी से अपने नर्सेज को, अपने फार्मासिस्ट बच्चों को, स्पेशली नर्सेज को उसी लगन के साथ बेस्ट ही बनाकर भेजना है। With great power comes great responsibility, and with awards, great awards comes a greater responsibility, because बहुत बड़ी try to find yourself whether you actually fit in those shoes or not. और इसी के साथ मैं डॉक्टर समीर मित्तल का फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा। Thank you so much for being with us over here on Leaders Today. We are privileged to have you, and for having shared your story with all our viewers across the world who are watching this show and would be watching the show. Thank you to our sponsors, Cloud Access, India's #1 cloud secure platform. RupiaPaisa.com, who has been transforming the life of individuals and entrepreneurs all over the nation, and Benson Trophies and Awards, #1 trophy manufacturer of the country. You know that I always say, but I'll do that again. I feel so confident when I'm wearing a suit from Tajiri. They are in Gurgaon. Check it out. And today, I think I'm definitely shining because Nupur's Makeup Academy has sponsored the show. And thank you so much. Do get in touch with Nupur in Gurgaon, Nupur's Makeup Academy. Thank you so much. Sudarshan Ramakrishna Chetlur on another exciting episode. We'll come back again with 2 more guests. Until then, have a great weekend. And keep the faith. सर मैं भी एट दी एंड में आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा पूरे मेरा परिवार की तरफ से। और अपने यहाँ बुलाया और ऐसा मुझे शानदार प्लेटफॉर्म दिया जहाँ मैं अपने मन की बात कर पाया, और आपके लाइक माइंडेड जब बात होती है ना, सच में बहुत मज़ा आता है। थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। माय प्लेजर।